Yeah, hi everyone. Welcome back in another session of InfraWorks. Or so far we have completed the general basic things in InfraWorks, right? Introduction we have seen how to model a thing, build new model builder we have seen, and then how to place component roads, planning roads, building components, how to import from another. You can see the software like Revit, 3D object and all. So, and in fact, in the last session, I created a storyboard as well. Storyboard is nothing but again a simple, you can say, simple animation or a walkthrough, right? We have completed that as well. Now, in this session, I will be deep diving into the storyboard as well. So we will see how to create the storyboard by using component routes. ठीक है? So उसके बाद finally when we complete our storyboard, so how we can export that video in another format that we will see also. So let's begin without much delay. Let me share the screen with you all and just let me know if it is visible to you. All right, I'm sharing the screen and then sharing the screen means this one. Okay. And yes, of course, let me open the InfraWorks as well. So that will be in a position to understand the things practically. All right. Are you with me? Okay. Okay. Very good. Create a storyboard using component road, manage and export that storyboard. That is the topic for today's session. And I'm of the firm opinion that the screen is visible to you guys. Okay. Yeah. All right. All right. Now, these are some of the do's and don'ts which I want you all observe during another maybe next 1 hour or quarter to 1 hour. Okay. Active participation gadgets on D&D mode. Put water bottles. Keep yourself hydrated. No spamming. Relevant questions. No other works. All right. This is the recap from the last session. हमने अभी तक जो पढ़ा है उसका एक सेशन रिकैप है ये. What's what we have covered in the last session was how to create a storyboard or walkthrough, right? So we went to present share button, then we saw storyboard creator screen, and we explored camera path animation, caption title we have seen already. If you do not understand, didn't get that, I can touch it upon today as well. ठीक है ना, थोड़ा सा और आज भी मैं टच करूंगा ना. I'll tell you कि how we can provide captions and titles, explore zoom option and all. These were the activities or tasks which we did in the last session. Now let's see what is inside the menu today. Today's agenda is how to create a storyboard using a component row. Correct. This is the main topic of today's session. अगर हमारे पास एक कंपोनेंट रोड है एंड हम चाहते हैं कि उसके उस पर से हम अपना फ्लाई थ्रू या फिर वॉक थ्रू बनाएं उसको यूज करते हुए. एंड इनफैक्ट इट इज वेरी very good. I mean, we are not supposed to give any, we need not to give any path to that. We have to just select the road and road के along along वो कैमरा प्ले करता जाएगा. We can provide the speed and all, और वो बहुत easily create कर देगा. I'll show you in a couple of moment. Manage a storyboard, how to manage that storyboard, how to save that, how to export that. Okay. एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, कंप्रेस कैसे कर सकते हैं वीडियो को. लेट्स से you do not have the laptop to carry or you want to carry it in WhatsApp or in your mobile, then we can compress that video. We can have a WhatsApp version as well. And sometimes it is possible that you need to present before the client, but client is not using that particular software, so you can always make that video into MP4 format, right? Let's begin. Now, storyboard using component root. We need to follow these steps. This is continue working on the same InfraWorks model. जिस model पे हम अभी तक काम कर रहे हैं, we need to open that model in InfraWorks 2025. So
I'm using 2025. If you are using any other version, you can open that. So dockyard is the file name. Okay, I'm gonna open that file and then zoom into that model. Okay, and then we'll go to the area which I have marked for the road or the storyboard creation, right? So storyboard create करने के लिए we will be taking the help of component roads. Okay, component road का अगर if you do not have any idea, मैंने पहले भी बताया था कि component road is different from a planning road. Planning road अगर आपको कहीं पर लगाना है, you want to plan something, you can easily put that planning road. However, if you want to convert that planning road or you want to place a component road, then you have to be quite clear. I mean, there should be some clarity about the concept. You can't you know you can't provide a curve as per your convenience, but it should be as per the design criteria. तो component road के अंदर कुछ inbuilt features हैं. Those features do not allow you to create any random figure, any random data. ठीक है ना? There are some codes and which are embedded. There are some criterias of roadway design, so it follows those criterias. तो component road को आप other words में you can say that कि ये close to actual road होता है, ठीक है ना? Elevation, स्लोप ग्रेडिंग एंड ऑल, और कर्व एक मैक्सिमम लिमिट तक या मिनिमम लिमिट से कम नहीं दे सकते, मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा नहीं दे सकते. हाउएवर दिस इज नॉट अप्लाइड टू प्लानिंग रोड्स, ठीक है? तो अब इफ यू हैव अ प्लानिंग रोड एंड यू वांट टू कन्वर्ट दैट इनटू अ कंपोनेंट रोड, सो वो पूरा स्टडी करेगा एंड देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू click right on the planning road and then it will show you the some options, convert into component road and you can convert it. और स्टार्टिंग से ही अगर आप कंपोनेंट रोड बनाना चाहते हैं तो यू हैव ऑप्शंस, आई विल शो यू जस्ट नाउ. ठीक है, नाउ लेट मी टेक यू टू द इंफ्रावर्क्स. दीज आर द स्टेप्स. फिर उसके बाद हमें क्या करना है, वी नीड टू गो टू प्रेजेंट शेयर, प्रेजेंट स्टोरी बोर्ड क्रिएटेड एंड ऑल. ओके, एंड देन स्टोरी बोर्ड क्रिएटर हमें ओपन करना है. स्टोरी बोर्ड क्रिएटर पैनल में हमें जो स्टेप्स दी गए वो वी नीड टू फॉलो दोज स्टेप्स एंड देन कैमरा पाथ एंड देन टू अबाउट इट. ओके, सो let me take you to the let me take you to the InfraWorks. It will make more sense there. Okay, so this is the InfraWorks window. Right, now we have open option, new model builder. हमारी फाइल का नाम है डॉकयार्ड. So I'll click on डॉकयार्ड and then it will take a couple of seconds. It will open the model. Okay, so this is our model, all right, on which we are working since the first class. And if you do not know, let me tell you, this is our component road. ओके, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखो कितने सारे डेटा ही मुझे दिखाएगा. इट विल शो मी नंबर ऑफ डिटेल्स, स्पीड भी है, ग्रेडिंग भी है एंड ऑल. ठीक है, इसके एलिवेशंस, चेंजेस एंड ऑल. हाउएवर इफ आई क्लिक ऑन प्लानिंग रोड तो इट वॉन्ट शो मी दिस मच डिटेल्स. दिस इज ऑल्सो अ component road, by the way. This is a planning road, right? I'm clicking on this, it is not showing anything. जस्ट दी PIV, पॉइंट ऑफ वर्टिकल इंटरसेक्शंस हैं जिनसे मैं इसका लेवल ऊपर नीचे कर सकता हूँ. दैट्स द ओनली थिंग. while if you click on component road you see BC, backward change, I think EC, I do not know what is EC. I think this is something related to the roadway technology. These are challenges, but in short I can say. ठीक है ना, ये चैनेजेस हैं और ये एलिवेशंस हैं कुछ. ये देखिए, मैं अगर ऐसे करता हूँ स्क्रीन तो इट विल शो मी सम एलिवेशंस एज वेल. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ कंपोनेंट रोड एंड अ प्लानिंग रोड. नाउ वी ऑलरेडी हैव टू प्लानिंग रोड्स ओवर हियर, सो विल बी टेकिंग द हेल्प ऑफ दिस कंपोनेंट रोड्स. ठीक है, ऑल राइट. सो एज पर द definition or as per the PPT, we need to go to present share storyboard created. To open the storyboard creator panel, you can also directly open that storyboard.
तो स्टोरी बोर्ड ओपन करने के लिए वी कैन कंट्रोल+6 भी कर सकते हैं एंड देन और एल्स वी गो टू दी रिबन, द टूल रिबन। ओके, स्टोरी बोर्ड पैनल में हमें नेम देना है एंड देन वी नीड टू फॉलो द स्टेप्स। ओके, टू सेलेक्ट द option create from component road. After that, click on the component road to follow the camera path. Right. Now I'll show you. So this is our model. This is the area, the project area. Okay, this is our what do you say, ribbon panel, tool ribbon on the top of the screen, and we need to go to present share. Once you go to present share, you will be having these many options: new storyboard, storyboard player. Okay, these options you will be having, and then finally you need to go. This storyboard creator screen will open in the bottom. Okay, and you will be having the options in the bottom. Correct. When you go to the bottom screen, the storyboard creator screen, so you will have options to create a new storyboard. You can always create a new storyboard. You want to delete the storyboard, you can delete from there itself. If you want to open an existing storyboard, you can open from there itself. So these are the 4 buttons. You can go there and then explore these options. Okay, and in the storyboard creation on the left hand side you have these options. So we need to follow create from component row, this particular option. Now let me take you to the InfraWorks. Correct, we are into the InfraWorks. Now control+6, let me explore this shortcut. This is the shortcut for storyboard creator screen. ठीक है, यहाँ पर बॉटम में हमारे पास स्क्रीन आ गई है, लेकिन मैं इसको बंद करता हूँ एंड देन आई विल शो यू अगेन। ठीक है, फॉर एग्जांपल यू आर in the project. Correct. Now I'll go to on the tool ribbon and then we have present share and then here we have present and here is the storyboard creator, control+6. I'll open this. This will show me this particular screen. All right. Now this is already existing. This storyboard using a component road is already existing. Let me show you how does it works. So basically जहां पर भी रोड है, जो कंपोनेंट रोड है, वो पाथ मैंने आई हैव सेलेक्टेड दैट रोड ओनली। ठीक है, मैंने कोई पाथ नहीं दी, मैंने नथिंग आई डिड गिव इट। द ओनली थिंग इज आई selected that component road, okay, while creating the storyboard, and it will follow the route along the component road. Okay, so this is another good option. I'll let you know in a couple of minutes how do we do that. Let me delete it first of all. This is the storyboard which is existing. Okay, now I will delete it. Correct. Now new storyboard. All right, just give me 1 minute. I'm getting a call. I'll be back soon. Yeah, sorry for the inconvenience caused to you. Okay, so back again to the script. I was discussing about this. Okay, now let me show you how do we do add new storyboards. So go to the buttons in the bottom. You have these options. Okay, these options, there are options. Okay, and then you can explore these options. What is this option? This is export. Okay, this is export current storyboard. This is export current storyboard to video. This is add new storyboard. So click on this, it will add a new storyboard here. Okay, I'm deleting this second one. So we have this new storyboard. We can give the name to storyboard. We can provide the name by clicking here. Okay, this is the storyboard name, component uh, component road storyboard. Like this is the storyboard name. Now
Here it will show the duration. This is the play button, this is the pause button, rewind button. Okay, now we have this model, and let's say we want to create a storyboard. Okay, no problem. So as I told you in the previous class, सबसे पहले आपको जहां से स्टार्ट करना है अपना स्टोरी बोर्ड, वो स्नैप आपको स्क्रीन पर रखना है, एंड देन यू हैव टू गो टू दिस पर्टिकुलर ऑप्शन, ऐड अ न्यू कैमरा पाथ एनिमेशन, जस्ट क्लिक ऑन दिस प्लस बटन। ठीक है, सो इसने क्या किया, जो सीन हमारे सामने अवेलेबल है, जो स्नैपशॉट हमारे सामने अवेलेबल है, उसको यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है, हमारी वीडियो एडिटिंग विंडो में की फ्रेम वन, दिस इज द की फ्रेम वन, यहाँ से कैमरा शुरू होगा आपका, यहाँ से आपका स्टोरी बोर्ड स्टार्ट होगा। नाउ इफ यू सी दिस स्मॉल प्लस बटन ओवर हियर, दैट मीन्स अब यहाँ पर हमें प्लस बटन को यूज करते हुए जाना है, और अपना जो स्नैपशॉट है, जो नेक्स्ट की फ्रेम है, दैट मीन्स टू से, अगर आप ये चाहते हैं यहाँ से कैमरा आपका सीधा इट विल गो टू द सी और दिस पर्टिकुलर बिल्डिंग, तो आपको नेक्स्ट की फ्रेम उस बिल्डिंग का ऐड करना होगा, तो इट विल ऑटोमेटिकली कनेक्ट द पाथ फ्रॉम हियर टू दैट बिल्डिंग। उसके बाद आप चाहते हैं वहां से वापस कैमरा आए और आपकी बिल्डिंग के फ्रंट में आए, तो थर्ड की फ्रेम विल बी ऑफ दिस पर्टिकुलर पोजिशन। ठीक है, इस तरीके से हम करते हैं। तो दिस इज अवर फर्स्ट पोजिशन। नाउ आई विल गो टू हियर, जो भी मुझे जहां से भी अपना कैमरा मुझे फ्लाई थ्रू कराना है, उस पर्टिकुलर पोर्शन का मेरे को यू नो स्नैपशॉट ऐड करना होगा, की फ्रेम ऐड करना होगा। दिस इज द सेकंड पोजीशन, लेट्स से मान लीजिए ये सेकंड पोजीशन है, मुझे यहाँ पर ऐड करनी है, तो आई विल टेक द हेल्प ऑफ दिस स्मॉल बटन, आई विल ऐड दिस। ठीक है, सो दीज आर द टू थिंग्स। नाउ थर्ड थिंग विच आई नीड टू ऐड इज, फॉर एग्जाम्पल ऐसे मैं यहाँ पर गया और मैंने यहाँ से यहाँ से जाकर इसको मैंने ऐसे ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ से मुझे बिल्डिंग का व्यू दिखाना है, तो इस तरीके से मैंने थर्ड व्यू ऐड कर दिया यहाँ पर। आई एम जस्ट टेकिंग द हेल्प ऑफ दिस स्मॉल प्लस बटन। ठीक है, जो स्नैपशॉट मुझे ऐड करना है, जो पोजीशन मुझे ऐड करनी है, वहां पर मैं जाता हूँ और उसको मैं प्लस की हेल्प से, फॉर एग्जाम्पल फोर्थ मुझे ये वाला चाहिए। ठीक है, दिस पर्टिकुलर पोर्शन। All right, I'll hit this plus button. Now, this is my storyboard which I have created. I will take the help of this play button and then I'll show you how I have created a storyboard. ठीक है जी, यहाँ से शुरू हुए हम, सेकंड पोजीशन हमारी ये थी, थर्ड ये थी, और ये फाइनल थी। अब आप कह रहे हैं कि इतना फास्ट क्यों हुआ है, so I'll explain this a bit. I will click here, and the moment I'll click here, I'll be having some options on the right hand side. ठीक है ना, दो विंडो हैं बेसिकली हमारे पास यहाँ पर, पाथ्स एंड एनिमेशंस की। ये हमारी वीडियो एडिटिंग विंडो है, यहाँ पर हमें वी कैन कंट्रोल स्पीड, टाइम टू द नेक्स्ट की फ्रेम एंड ऑल। ठीक है ना, सो अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर, सो देर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू, दोनों की फ्रेम्स अटैच्ड हैं, एडजेसेंट हैं, सो देर शुड बी सम टाइम डिफरेंस बिटवीन द टू की फ्रेम्स, इसीलिए वो इतना फास्ट आता है। ठीक है, तो अगर आप टाइम देखेंगे तो हमारा जो टाइम फ्रेम है नेक्स्ट का, वो 3 सेकंड है। आगे मैं इसको बढ़ा देता हूँ, लेट्स से 5 सेकंड कर देता हूँ। नाउ सेकंड की फ्रेम, थर्ड की फ्रेम है हमारा, थर्ड की फ्रेम में और फोर्थ की फ्रेम में ओनली देर इज अ डिफरेंस ऑफ 2 सेकंड्स। मैं इसको 3 और 4 सेकंड के बीच में कर देता हूँ। नाउ दिस इज माई लास्ट की फ्रेम एंड दिस इज माई सेकंड की फ्रेम। सो सेकंड की फ्रेम के अंदर ओनली 1.1 सेकंड का डिफरेंस है, सो आई विल मेक इट 3 सेकंड्स अगेन। ठीक है, सो यू हैव थ्री ऑप्शंस, यू कैन कीप द स्पीड बाय डिफॉल्ट, जो स्पीड हमारी अवेलेबल है ये वाली। ठीक है, यू कैन सेट द स्पीड, यू कैन टेक द ऑप्शन ऑफ स्पीड इफ यू नो कि कितनी स्पीड में मेरी क्या मतलब व्हाट आई वुड से, मतलब किस स्पीड के साथ कितना चेंज होगा। और अगर आपको टाइम में काम करना है, तो यू कैन यूज दिस थर्ड ऑप्शन, टाइम टू द नेक्स्ट की फ्रेम। सो जनरली आई वुड रिकमेंड दिस थर्ड ऑप्शन, बिकॉज जनरली अगर हम 3 से 4 सेकंड का
गैप देते हैं बिटवीन द टू की फ्रेम, सो इट लुक्स क्वाइट ओके। आई विल शो यू जस्ट नाउ। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड की फ्रेम है और इसमें मैं चाहता हूँ कि 3 सेकंड का डिफरेंस होना चाहिए। नाउ यू सी देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू की फ्रेम्स। ठीक है, ऑलमोस्ट एंड ऑन एन एवरेज 3 से 4 सेकंड का डिफरेंस मैंने रखा है, तो विच एज पर एक्सपीरियंस आई कैन टेल यू विच इज ओके। ठीक है, सो नाउ play this, go to the rewind button or the start button or the pause button, what you say. This is basically stop playing the current storyboard. So when you hit this button, ये जो है आपके स्टोरी बोर्ड को स्टॉप कर देगा और स्टार्टिंग से प्ले करेगा। तो पहली स्टोरी बोर्ड आपने देखी थी, वो एकदम क्विकली यहाँ से वहां गया कैमरा, वहां से एकदम से फटाक से वो बिल्डिंग के सामने आया। नाउ यू विल सी कि ये ग्रेजुअली स्मूथ स्पीड के साथ यहाँ पर जाएगा, वहां से फिर यहाँ आएगा और यहाँ आने के बाद बिल्डिंग के नजदीक जाएगा। ठीक है, आई एम प्लेइंग द स्टोरी बोर्ड। देखिए अब आप आराम से सी द डिफरेंस बिटवीन द टू। अब ये देखिए कितना आसानी से हुआ है, और ऐसे गया, फिर उसके बाद ऐसे गया और यहाँ जाके ये बिल्डिंग के नजदीक चला। ठीक है, नाउ दिस इज द डिफरेंस। अब हमने ये दिस इज द मैनुअल मेथड और द मेथड वन विच वी हैव सीन सो फार। अब अगर हमें मान लीजिए हमें कोई स्टोरी बोर्ड बनाना है अलोंग द रोड, और अलोंग द रोड आपको पता है इस तरीके से तो बन नहीं पाएगा। या तो हम वॉकवे वाला ऑप्शन एक्सप्लोर करें। ठीक है ना, वॉकवे वाला एक ऑप्शन होता है हमारे पास, एड रिकॉर्डेड वॉक, या तो ये करें, वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। ठीक है, सो नाउ वी हैव एन ऑप्शन इन द कैमरा पाथ ओनली, क्रिएट फ्रॉम कंपोनेंट रूट। ठीक है, कंपोनेंट रोड हम यूज करेंगे, सो वी हैव 2 3 कंपोनेंट रोड्स हियर। उससे पहले हमें पहले इस पोजीशन को यहाँ से हमें दूसरी पोजीशन पे लेके जाना पड़ेगा, और वो पोजीशन कौन सी होगी, हमें इस पोजीशन से लेट से यहाँ आना है। ठीक है ना, थर्ड पोजीशन हमारी, या फिर यहाँ से हम यहाँ आए, इस तरीके से हम इस पोजीशन में आ गए यहाँ पर। दिस इज द कंपोनेंट रोड। तो मेरा नेक्स्ट जो होगा वो ये वाला की फ्रेम होगा, उसके बाद आई विल गो टू इन दिस पोजीशन। ठीक है, लेट्स से इन दिस पोजीशन, ओके, एंड देन आई विल सेलेक्ट द कंपोनेंट रूट। ये मैंने बना दिया यहाँ तक, इसमें मैंने टाइम को एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर है हमारा 14 सेकंड, तो इसको मैं कम कर दूंगा। आई रिड्यूस इट, मेक इट 3 seconds। नाउ अगेन आई विल प्ले फॉर यू सो दैट यू विल गेट एन आइडिया। यहाँ से हमारा स्टोरी बोर्ड शुरू हुआ, इस बिल्डिंग तक गया, समुद्र तक गया, एंड देन फाइनली हम अपने बिल्डिंग के नजदीक आए। ठीक है, इस बिल्डिंग को हमने देखा, उसके बाद वापस से हम पार्किंग की तरफ आए। पार्किंग एरिया के पास आने के बाद हमने फाइनली कैमरा को इस पोजीशन में रखा कि नाउ वी हैव टू यूज दिस कंपोनेंट रूट। ठीक है जी, ओके, नाउ आई विल गो टू दिस पर्टिकुलर ऑप्शन, आई विल take this third option, create from component root। it is asking कि I need to select the component root। ठीक है, I am selecting the component root। now ये मुझे ऑप्शन पूछता है कि कैमरा पोजीशन कैसा रखना है, हॉरिजॉन्टल ऑफसेट रखना है क्या, लेफ्ट या राइट, या फिर सेंटर लाइन ऑफ द रोड। इफ यू वांट टू कीप on the center line of the road, there is no need to change any value or any to provide any value। vertical offset कितना ऊंचा रखना है सड़क से आपको कैमरा, सो जनरली वी कीप 1.2 एज पर दी ह्यूमन आई एलिवेशन। ठीक है, टारगेट पोजीशन, ऑफसेट, हॉरिजॉन्टल ऑफसेट कुछ नहीं, वर्टिकल ऑफसेट कुछ नहीं, एडवांस सेटिंग्स कुछ नहीं, सो डोंट गो, यू कैन प्रोवाइड द स्पीड एज वेल। ठीक है ना, 25 की है या 50 की है या कितनी है, या फिर ऑटोमेटिक रखना है, वट एवर। की फ्रेम डेंसिटी 20 मीटर की रखनी है, ठीक है, 30 मीटर की रखनी है, you can do that as well। now once you do all these things you need to just press key create from here। बाकी सेटिंग्स को आप चेंज करें ना करें, वर्टिकल डिस्टेंस को भी आप चेंज करें ना करें, ऑफसेट को कर सकते हैं नहीं कर सकते, हॉरिजॉन्टल को, बट बाय डिफॉल्ट आप ऐसा रखें। और हिट एंड आई मीन यू कैन ट्राई इट विद योर ऑन। आप देखिए ना करके कि इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफसेट लेने से क्या होगा, वर्टिकल ऑफसेट लेने से क्या होगा। ठीक है ना, और आप इसको जो है यू कैन कीप इट बाय डिफॉल्ट एज वेल एंड जस्ट हिट द क्रिएट बटन, it will create the storyboard। correct, now I'll
play the storyboard and you will see the magic now. Wait for a moment. Let me play from the beginning. This is the starting. Okay, यहाँ से हमने start किया था. This is our manual, you can say storyboard. ठीक है, manual के बाद हमारे पास फिर we will create from the component road. Component road से हम देखेंगे कैसे हमने with the help of component road भी हमने कैसे बनाया. ठीक है, अब ये हमारा component road है. Component road पे automatic speed हमने ली है. It will take us through the component road. ठीक है, ओके. इसके बाद we have one more component road. I will add that component road as well. ठीक है जी. I'll go to this particular option and then select create from component road. It is asking select the component road. ठीक है, so I have selected this component road. This time I'm not changing any value, or let's say I'm changing target position offset maybe 1 meter. Let's see what is the difference. और horizontal offset भी मैं कहता हूँ 1 meter. ठीक है, and then we will see कि क्या होता है. ठीक है, I'm again playing the storyboard from the beginning and you will see the magic. You can always tweak the speed and all. You can always adjust the speed and all. Okay, that's not a big deal. आप 50 km/h करना चाहते हैं, थोड़ा और फास्ट करना चाहते हैं, because generally people do not have that much of time to watch your this thing. This is our another component road. ठीक है, ये हमारा दूसरा component road है और इसके अंदर एक कार भी है. ओके, एंड इलेक्ट्रिक पोल्स भी हमने लास्ट टाइम इसमें इंस्टॉल किए थे. यू कैन सी दैट जहां तक भी कंपोनेंट रोड है वहां तक ही हमारी वीडियो प्ले होगी एंड देन इट विल स्टॉप द एनिमेशन और वॉक थ्रू. राइट, जो इसमें गाइस इंपॉर्टेंट चीज है नोट करने वाली, ध्यान रखने वाली, वो ये है कि जहां से भी आपका कंपोनेंट रूट शुरू होता है, जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, वहीं से वो स्टोरी बोर्ड स्टार्ट करेगा. ठीक है ना. लेट्स से योर रोड इज स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड यू हैव सेलेक्टेड द रोड एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि मेरा राइट से लेफ्ट जाएगा. ऐसा नहीं होगा. योर स्टोरी बोर्ड विल स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ओनली. तो आपको अपने कैमरे की पोजीशन इस तरीके से अलाइन करनी है ताकि आप उसको अच्छे से सिंक्रोनाइज कर सकें. करेक्ट, दैट्स द थिंग. Alright, so this was the thing which I wanted to explain to you. Now further create storyboard using component road. After that a dialog box will appear indicating the settings for keyframe, speed, camera, position. Click on create. Storyboard is created. You can see that for frame. Edit and make changes in the keyframes according to your need. Yes, of course. You can also add different captions at different locations in the storyboard. Click on play button to play the storyboard. Right, so we have seen that when we selected that component road, create using component road, so this particular option or this particular window was appeared. So we have changed the values, we have tweaked the values, and then we created the storyboard, and finally this was the result. This is the play button, this is the pause button basically to start with the next. Correct, so this we have already done and this is how it appears. Okay, the window appears. Now we'll see how to add some captions. Let's say further to the, now for example I want to add some captions, or I would say say for example I want to add some captions over here on this particular I'm sorry. Let's say for example we want to add a caption over here. Okay, how to add the caption? So this is the option for caption title.
आई एम एडिंग द कैप्शन। व्हाट टू डू फॉर एडिंग द कैप्शन? ये जो प्लस का सिंबल है यहाँ पर जाना है और यहाँ पर टाइटल ऐड करना है तो टाइटल ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो मुझे कैप्शन ऐड करना है फॉर एग्जांपल। तो कैप्शन मैं यहाँ लिखूंगा राइट साइड में। मैं बोलूंगा जैसे फॉर एग्जांपल टनल, टनल अहेड, ऐसे करके वार्निंग है, या फिर यू कैन कनेक्टिंग टनल फॉर एग्जांपल। कनेक्टिंग, दो रोड को कनेक्ट करने वाली कोई टनल है, ठीक है ना, रोड के ऊपर। जैसे मैं कहता हूँ कि द्वारका, द्वारका टू गुड़गांव कनेक्टिंग टनल, ठीक है। आई एम फ्रॉम दिल्ली एनसीआर, सो आई एम यूजिंग दैट एग्जांपल। ओके, यू कैन यूज एनीथिंग। नाउ आई हैव एडिड द कैप्शन। अब ये कैप्शन मुझे रखना कहाँ है वो मुझे देखना है, ठीक है ना। सो आई विल ऐड एज पर माई रिक्वायरमेंट। जहां से भी टनल शुरू हो रही है उससे कितने पहले मुझे रखना है, कितना बाद में रखना है। सो अकॉर्डिंगली आई कीप दिस। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसका टाइम फ्रेम बनाना चाहता हूँ, और ये टाइम फ्रेम, ठीक है जी। नाउ आई प्ले अगेन एंड देन विल सी कि हमारा जो कैप्शन है वो कैसा दिखता है, ठीक है। कैप्शन हम देखेंगे। द्वारका टू गुड़गांव कनेक्टिंग टाइम, ठीक है। यहाँ पर हमारा थोड़ा सा पहले देखिए, मैं उसको थोड़ा सा बाद में करना चाहता हूँ। सी, द्वारका टू गुड़गांव कनेक्टिंग टाइम, गुड़गांव लिख दिया है मैंने, सॉरी। आई कैन एडिट दिस, आई कैन इजिली एडिट दिस, ठीक है। इस तरीके से ये वार्निंग सिंबल है या फिर आपका कैप्शन है। मान लीजिए जैसे आप ड्राइव कर रहे हैं और आपको पता चल जाए कि आगे कौन सी टनल आने वाली है कनेक्टिंग टनल, राइट। नाउ फॉर एग्जांपल आई वांट टू एडिट दिस, आई कैन इजिली एडिट दिस, नो प्रॉब्लम। गो टू हियर, गुड़गांव की स्पेलिंग पहले ठीक करते हैं, क्लिक करिए वहां पर। और मान लीजिए आपको लग रहा है कि थोड़ा ऊपर है, जो टनल का लिखा हुआ जो आ रहा है, जो कैप्शन है वो थोड़ा ऊपर है, ठीक है। और लेट्स से यू वांट टू shift the shift the location of this particular area. So say location is here, right? Here is the location tab. Go to this drop down menu. You can align this caption to left, to right, to center, to bottom. Okay, wherever you want. Say for example, we want center center. Okay, it will come center center. Now it will come center center. It will not go to top or bottom. Let's see. Right? This is how you can modify the location. Okay. Moreover, this is the text. You want to change the size of the text. It is looking bigger. We can reduce it, make it 18 or 16, whatever you want. Now you will see it will be of less, I mean, smaller font size will be small. Correct? You can do that as well. You can do the font style, you can do the bold or your the text size, italic, right? एंड कंटेनर में आप उसकी लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। अगर ये लोकेशन आपको फिट इन नहीं हो रही है, यू वांट टू हैव योर ओन कस्टमाइज्ड लोकेशन, सो विद द हेल्प ऑफ दीज things you can always do that. For example, I want a little bit on the left side, so customer container x, let's say I am reducing this. Okay, this is reducing container size. Y, let us reduce this y as well. Container offset, पूरे कंटेनर का ऑफसेट किधर करना है, लेफ्ट राइट में किधर को करना है, ठीक है। सी, आई एम, if I am increasing x value, it is going towards right, correct. And then if I'm using I'm doing this y, so it will positively go down and negatively go up. This is how we can use these containers, correct. There are certain locations, positions which you can always use, and if they are not aligning with your requirement, then you can use these customized options for locating or for adding captions and all. ठीक है जी, ये आपका कैप्शन ऐड हो गया। व्हाट एल्स? नाउ ड्यूरेशन आपको यहाँ से पता चलती है। नाउ अब वी हैव कंप्लीटेड दिस, करेक्ट। द नेक्स्ट थिंग इज, एज पर द टीपीटी, मैनेज स्टोरी बोर्ड एंड एक्सपोर्ट अ वीडियो।
फॉर एग्जाम्पल यू हैव कंप्लीटेड द स्टोरी बोर्ड, आपकी स्टोरी बोर्ड कंप्लीट हो गई, आपने थैंक यू वगैरह जो भी कैप्शन ऐड करने थे कर दिए, आपने टाइटल ऐड कर दिया, राइट, आपने हर चीज ऐड कर दी उसमें। I'm sorry again. Let me show you how to add the title as well. This is the title. Add a title. Before that, we need to go to the beginning and select that particular keyframe. जहाँ पे हमें ऐड करना है उस keyframe को select कर लेंगे तो वहीं पर automatically ऐड होगा। ठीक है, तो this is our title। मान लीजिए हमारा title है डॉकयार्ड प्रोजेक्ट। Just give me 1 minute। Yes, so yes, I'm back। So I was adding the डॉकयार्ड प्रोजेक्ट टाइटल। ठीक है, टाइटल हमें बिगनिंग में ऐड करना होता है। दिस इज वेरी कॉमन थिंग, राइट, कि हमारा टाइटल जो होता है वो स्टार्टिंग में होता है। करेक्ट। नाउ लेट मी रिप्ले इट अगेन। डॉकयार्ड प्रोजेक्ट। करेक्ट। द्वारका टू गुड़गांव कनेक्टिंग टनल, राइट। So this is our storyboard। Now if you want to add something, thank you, like thank you or anything else in the last, so you can add always, like you can add that thank you caption as well, thanks। Okay, here you can add thanks, so when you play this video you can add the thanks as well, you can directly take it too fast। I'm just forwarding it so that it can complete early। Okay, now you can add thanks like this। You can always adjust this position as well, thanks, left to right, bottom and all। Now you are done with the storyboard, you need to export this video, you can always export this video। Okay, these are the settings, uncompressed video, this is the path where I want to take this video। Okay, you can provide the path, if you want to take it to the desktop, take it to the desktop, no problem। Frame rate 25 frames per second, viewpoint resolution, set resolution, keep them as it is। I would like to request you कि आप इसको study करें because this is something related to the videography। उसमें मैं बहुत ज़्यादा expert नहीं हूँ, but जो लोग इसमें बहुत expert हैं वो इसका बहुत ही अच्छे से use कर सकते हैं। As far as our field is concerned, since we are engineers, we are not more into the animation or graphics or what you say प्रोफेशनल वीडियोग्राफी। सो ये ऑप्शंस लिमिटेड हैं बट यू कैन ऑलवेज एक्सप्लोर। अगर आप बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स पे जाएंगे तो इट विल रिकॉर्ड द वीडियो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, इट विल सेव द वीडियो टू इटसेल्फ। करेक्ट, तो इसको हम सेव कर सकते हैं, यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। और जब आप इसको एक्सपोर्ट करते हो तो क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, इसमें इसका जो साइज है वो दैट्स क्वाइट ह्यूज। ओके, दैट इज वेरी बिग, size is very big, and because of that reason you cannot export that video into your WhatsApp or something else due to the data size limit। So for that you have to have one particular software which is known as uh, handbrake। Okay, handbrake, this is the software handbrake। So you can use this handbrake and you can reduce the size of your video। So here is the video ready for our this thing, dockyard project।
right? से फॉर एग्जाम्पल आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है, यू कांट प्ले दैट स्टोरी बोर्ड क्रिएटर, तो आप लैपटॉप ले जाएं और इस वीडियो को डायरेक्ट प्ले कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ योर क्लाइंट, ठीक है। अभी अगर मैं आपको बताऊं तो इसका जो साइज है, दैट इज वेर इज द प्रॉपर्टीज, the size is 3.39 GB, which is huge. So we can use Handbrake. This is the particular software, Handbrake. You can use this particular software and it can compress your video into MBs. This is very powerful, my dear friends. Right? This is literally very powerful and you can use this software. Okay, manage storyboard and export a video. So this was our project and we created a storyboard using component code and then we exported this as a video. We have saved, we have provided a path that was desktop in my case, and then it asked some regarding some settings. So we didn't modify the settings, we used our default settings, correct? Component or storyboard, export storyboard to video, component or storyboard, उसको नाम दे दिया, थ्री डॉट्स हमने यूज किए, थ्री डॉट्स क्या थे, लोकेशन, बेसिकली लोकेशन देने के लिए। रिपीट द प्रोसीजर फॉर द storyboard as well, exported to video, our storyboard got exported to video, save the file, ठीक है। This is all. So the panel is open for the class. I mean, I'm available for the next 5 minutes for the question and answer. If you have any relevant question, please go ahead and ask. Otherwise, I'll wrap up this session. And now we are left only with one session, that is miscellaneous. I'll be telling you some of the miscellaneous commands in Navisworks, InfraWorks, which are quite useful, and you may require to use those commands as well. So for today's session, I'm pretty much done. If you have any questions, please go ahead and ask. Otherwise, I'm just ending this session within the next 2 minutes. All right, bye bye. Take care. I'll see you in the next video, and that will be our last video, last session for the what? Last session for the InfraWorks. Then we'll be completing InfraWorks. Thank you very much. Bye bye. All right, friends. See you in the next class. Bye bye. Take care.